are there a few cards that solve a particular purpose? There is a specific purpose for a specific type of person which is very critical for him. I know I'll get punched by you in the face, लेकिन मेरा पहला card is Show off. my मैं अब लग्जरी शॉपिंग बोल रहा हूँ ना, दिस कार्ड इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इंडिया में. आप ये बताओ ना, लेकिन आप मर्सिडीज कब ले रहे हो? All of this I realized that there is this bunch of people who are living their life on weekends. 5% on all spends and 20% on these 4 partners. If you're someone who has to pay advance tax, ये कार्ड जबरदस्त है. What I also like about this card is the 1:1 transfer to our favorite airline. बैंकॉक के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई कार्ड नहीं है, ना ही एम्स्टर्डम के लिए, ना ही वेगस के लिए. Flashing bright, we're on the go. Tune in now, there's so much to know. Earning bits, travel dreams we sow. All aboard the Great Indian Points and Miles show. 0 to hero in the blink of an eye. Fly first class, no need to be shy. Redemption sweet, touching the sky. Award seats booked, let's give it a try. Award seats booked, let the points flow. It's all aboard the Great Indian Points and Miles show. Unlocking journeys wherever you go. The sky's the limit, feel the travel mojo. Hello and welcome everyone to the Great Indian Points and Miles show. This is your host Adil and we're back with a very exciting episode on what we're calling purpose-built credit cards. Now there are a lot of cards out there in the market, but sometimes you need to use specific ones to extract specific rewards. There are generalist cards, there are travel-specific cards, and then there are purpose-built cards. So what we've done today is, Deemat and I were chatting, and we said that are there a few cards that solve a particular purpose and which ones are the ones that we want to narrow down on, because the community, which is all of you, will be able to relate to it. I'm sure there are lots of cards that you will relate to, maybe some that you might not relate to. We want you to point them out in the comments so that we can have this good conversation going. And if you're in the Great Indian Lounge on Discord, go ahead and put that into one of the cards channels. You know what to do. We'll continue the conversation there. With me on this conversation today, on this pod, Mr. Dhimant. स्वागत है. क्या हाल है धीमंत? Welcome. I mean, my idea of this episode came from Adil. The fact that कोई तो मेरे से बात कर रहा था, वो बोल रहा था क्या जिंदगी भर हर कोई एयरपोर्ट पे ही जीता है क्या? तो like, why not think about other stuff as well? And then I chatted with Tashi and she was also like, हाँ यार point तो ठीक है. So I thought, why not bring that idea on the table and see where we go from there. So, for you audience, I think you know that we have a lot of designations for Dhimant on the show. One of those designations is also CFO. CFO Chief Financial Officer नहीं होता है. मैंने बोला है पहले एपिसोड्स पे, CFO का मतलब होता है चीफ फ्रेमवर्क्स ऑफिसर. बता दो भाई फ्रेमवर्क, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा, तुम बोलोगे लेट्स अप्लाई अ फ्रेमवर्क टू इट. यार इसमें हम रेटिंग नहीं करेंगे, so we don't have a rating framework, but what we'll do is I want to break down what purpose cards means, right? Purpose cards वो है यार कि मतलब it's not like you carry one card and swipe it everywhere. There is a specific purpose for a specific type of person which is very critical for him. राइट कि आप उस कैटेगरी पे बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करते हो. तो एक तो तरीका वो होता है कि यार आप एक जर्नलिस्ट कार्ड ले लो जैसे आपने बोला एंड कीप स्पेंडिंग द सेम कार्ड टू गेट मैक्सिमम रिवॉर्ड्स. दूसरा तरीका ये होता है कि द रिवॉर्ड्स आर सो अट्रैक्टिव फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार्ड ऑन दैट स्पेसिफिक कैटेगरी, इट्स ऑलमोस्ट पर्पस बिल्ड फॉर दैट कैटेगरी, right? So that's what we are trying to do, and we are trying to decode if there are cards which are built for certain purposes, right? So I'm going to throw you the first challenge कि आपके माइंड में ऐसा कौन सा कार्ड है, एंड आई वुड वांट यू टू एंश्योर दैट आपने वो कार्ड यूज किया है, राइट? सो और यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट कार्ड वेल. बताओ आपके माइंड में ऐसा कोई कार्ड है पर्पस बिल्ड जो आपको लगता है कि इज बिल्ट फॉर अ स्पेसिफिक आइडिया एंड अ स्पेसिफिक थॉट. कार्ड्स तो बहुत हैं. मुझे पता है कौन से कार्ड की बात है, शुरू कर लेंगे. I know I'll get punched by you in the face, लेकिन मेरा पहला कार्ड is my platinum charge card. Show off. My American Express platinum charge card. This card
truly changes the game when it comes to luxury shopping. मैं अब luxury shopping बोल रहा हूँ ना, this card just there's no match. इसका कोई competitor नहीं है मेरे हिसाब से इंडिया में. मैं example देता हूँ. For example, you want to buy something from Bulgari. Amex offers 10x rewards, not 10%. So both you and I know कि Amex का base reward rate platinum charge का 2.5% है. लेकिन अगर आप कुछ बल्गारी से खरीद रहे हो, मल्टीप्लाई स्ट्रेट दैट बाय 10, मतलब 25% बैक मिलेगा आपको एज पॉइंट्स ऑफ दैट एंटायर ट्रांजैक्शन, विच इज मैड. लेट्स गो वन स्टेप फर्दर. लेट्स से आपको कुछ डाइसन से खरीदना है. नाउ वी ऑल नो दैट all Dyson products are trending these days, but they're also very expensive, right? 10x on Dyson as well. Let's also talk about, let's say if you're buying a luxury car, right? समझो Mercedes आप खरीद रहे हो, it gives you 10x back. Now इसके अंदर थोड़े T&Cs हैं, like I think the 25% is valid only for the first 10 lakhs. But think about अगर आप 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर रहे हो आपके Amex के ऊपर, and you're getting 2.5 lakh points. Man, that is unbelievable, right? Let's also come to the other stuff, right? For example, if you enjoy fashion and if you're buying something from Tata Click Luxury or Tata Click Fashion, even for that matter, उस पे भी 10x है. मेरे को सिर्फ ओनित्सुका के लिए कार्ड लेना पड़ेगा भाई. एक मिनट, आपके पास था ये कार्ड, but then somebody decided not to renew it. So आप ये बताओ ना, लेकिन आप मर्सिडीज कब ले रहे हो? देखो, फिलहाल में मैं इस पर्पस ड्रिवन कार्ड की बात कर रहा हूं. सो पर्पस ड्रिवन कार्ड के बारे में बात करते हुए, अनदर थिंग, राइट? सो इफ यू लुक एट द कैटेगरी दैट्स रियली ग्रोइंग ऑफ एफ्लुएंट इंडियंस, they want to buy signature pieces of jewelry. Okay. And signature pieces of jewelry, one of the players that has been doing a lot of rounds is Zoya. Zoya is a brand by the Tata Group. इनके बहुत अच्छे jewelry signature pieces होते हैं. And my wife is a fan there. She really likes the product. So when you go there, anything that you buy, you get a 10x. So I think if there is a persona that really likes luxury shopping, then the Amex Platinum Charge is a जबरदस्त कार्ड. मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बीवी को अगर एक कार्ड दे दिया तो ऐसा वो डर का माहौल है वाला सीन बन जाएगा. पता नहीं कितने लाख का स्वाइप होने वाला है. मैं अभी मैसेज कर रहा हूँ ताशी को कि भाई आपके जो आदरणीय पतिदेव हैं, ये कार्ड को आपसे शील्ड करके रखे हैं, एक्सेस ले लो, एड ऑन फ्री है. नॉट बैड यार. आई थिंक फिर लग्जरी शॉपिंग के लिए देन सीम्स लाइक अ रियली वेल पर्पस बिल्ड कार्ड. ऑसम. आई थिंक one more category and purpose built card I can think of, and this is a unique category I feel. बीच में I was talking to somebody and ये realize हुआ कि यार ऐसी भी जनता है जो कि अपनी जिंदगी वीकेंड पे जीती है. ठीक है, मतलब आप इमेजिन करो कि यार वो बंदा मंडे टू फ्राइडे इतना बिजी है कि वो कुछ ना उसको टाइम मिलता है, रात को 11 बजे घर आता है, राइट? बट दीज गाइज आर वीकेंड एनिमल्स, राइट? मतलब वो जिंदगी पूरी जीते हैं वीकेंड पे. दे वेक अप एंड यू नो दीज आर गाइज हु आर वर्किंग आइदर यू नो अ फुल टाइम जॉब एंड देन वीकेंड पे दे वेक अप एट 1 o'clock, सडनली डिसाइड करेंगे यार दोपहर को मूवी देखने चलते हैं, राइट? वो बोलते हैं कि यार मैं आज जेप्टो से कुछ मंगा लूंगा, जेप्टो कैफे से मैं मंगा लूंगा वियतनामीज आइस कॉफी. आपने मैवरिक में भी उस बंदे ने लेट्स से जेप्टो से मंगा लिया. एंड देन देयर इज यू सॉ सम इंस्टाग्राम रील, कुछ अच्छा लगा, आपने बोला अमेजॉन पे शॉपिंग करेंगे, ये वाली थेरेपी वाली कुछ शॉपिंग कर लेंगे. All of this I realized that there is this bunch of people who are living their life on weekends. I came across this card and I was researching on the website because you know we keep doing this consult calls and like people are saying मेरा काम तो ये है, मैं weekend पे जिंदगी जीता हूँ, मुझे यार नहीं चाहिए flashy travel, तो क्या करूँ मैं? And I was like, I realized that when I scrolled through this card, I came across this Magnify Federal 5 credit card. ये क्या कुछ नया है क्या? हाँ मतलब देखो ना यार, like look at this card. मतलब मैंने भी पहली बार देखा जब मैंने went through the website. And the best part is it looks very sexy. Literally, I mean, if you can just show this a little bit more in detail. And what I realized is that it's made as per your spending pattern. It is not made for to be a normal everyday card. It is made for weekend spending. And Zepto, Book My Show, Amazon, you know, Zomato, इस चीज पे ये रिवॉर्ड करता है. 5% on all spends and 20% on these 4 partners. तो इमेजिन करो जो बंदा वीकेंड पे अपनी जिंदगी जी रहा है, मूवीज पे सब जगह पे ये डिस्काउंट मिल रहा है, राइट? एंड अदर थिंग व्हिच आई फेल्ट इज दैट द पर्पस इज प्रॉब्ली डिफाइंड एज पर द पर्सोना, नॉट एज पर अ कैटेगरी, व्हिच मींस दैट इट ब्रेक्स इनटू दैट 2-3 कैटेगरीज दैट दिस पर्सोना टिपिकली यूजेस, राइट? लाइक आई सेड, इट लुक्स सेक्सी, मतलब आपको शर्म भी नहीं आएगी अपने कार्ड में रखने के लिए, राइट? पॉकेट में कि भाई गोल्ड वीजा जिस तरह से गोल्ड में लिखा हुआ है, आई लव दैट, इट्स वेरी कूल. बेस्ट पार्ट,
व्हाई डिड आई अप्लाई? मैं गया, मुझे क्यूरियोसिटी लगी, और मेरी वाइफ काफी बार ऐसे है कि मतलब यार वो वीकेंड पे वाउचर यूज नहीं करेगी, ऑल्दो आई यूज इट, सो आई सेड यार उसको दे दूंगा, लेट हर शॉप, एंड वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा, दर्द भी नहीं होगा. एंड आई रियलाइज दैट इट्स लाइफ टाइम फ्री. देयर आर नो एनुअल चार्जेस, नो लाइफ टाइम पूरा कुछ भी चार्ज नहीं है, एंड देन देयर इज नो हिडन चार्जेस एज वेल. तो फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है, right? And you get that 5% back as well. So I found it very interesting, and it's co-partnered with Federal Bank. It's called the Magnify card. So if you like are seeing this, and if you're one of those guys who lives your life on the weekend, पूरी जिंदगी जी लो, बोलते हैं ना, जी लो जा रहे सिमरन, जी ले अपनी जा जिंदगी. सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी. So you also speak to a lot of people who ask you for advice, right? Do you think like you meet those people? Because I see a lot of these people who are living their life on weekends. Yeah, I think ये youngsters के लिए बहुत अच्छा है, right? I mean, if you think about it, people in let's say between the 24 to 30-year-old persona, जो समझो महीने का 60,000 70,000 कमा रहा है, 60-70K a month, right? They want this card because they are the ones out and about on a weekend. They want to do everything on a weekend. मूवी भी देख ली, शॉपिंग भी कर लिया, डेट पे भी चले गए, हो गया, एंड देन बैक टू द ग्राइंड अगेन ऑन मंडे टू फ्राइडे, सिंपली बिकॉज लाइफ इज बिजी मंडे टू फ्राइडे. सो आई थिंक यार नया है, आपने लिया है तो ढंग का ही होगा, अभी आप यूज करो. आपको पता है खुजली नया कार्ड मार्केट में आया है तो कुछ तो खुजली करनी है. आई थिंक मेरे को, आई मीन ऑनेस्टली, आई ऑल्सो लाइक दिस न्यू एज कार्ड्स, बिकॉज somehow they are also attached with an app and all of that things, right? तो थोड़ी खुजली थी तो ट्राई करते हैं. लेट्स सी हाउ इट pans out for us, but I'm pretty sure that for people who live their life on weekend, it's a great idea. Like that's at least my point of view. Cool. Dhimant, you know, another part of my personality is that I'm a huge foodie, but also I travel a lot, I do a lot of business meetings, I entertain a lot, because of which I ended up dining often a lot. And because of which I also wanted a card that can help me get discounts at a lot of these amazing places. So I'll give you a few examples, right? Typical routine, most people know that Friday mornings, you will find me between, let's say, 10 a.m. to 12 noon at Maverick and Farmer. 100%. मैं वहाँ पे होता ही हूँ, क्योंकि जो भी मेरे एक्सटर्नल मीटिंग्स होते हैं, वो आइदर ऑफिस में होते हैं, कस्टमर लोकेशंस में होते हैं. अगर ये दो जगह नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो मैवरिक और फार्मर में हो रहे हैं, क्योंकि मेरे घर के करीब है. Also, you know that I absolutely love the Vietnamese iced coffee there. Yes. It is fantastic. It is not coffee, it's a dessert. Correct. मेरे को बहुत पसंद है वो. और there is something special about that cafe. It's open air. लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, रग्बी खेलते हैं वहाँ पे. The vibe is just great. So, because I go there, every time I eat there, I get a 25% off. Yeah. And that happens on the Easy Diner, which is a sweet, sweet discount. And that card is this card, which is the Easy Diner credit card. Now, the other But thing that I'll tell you one thing about why I feel this is a great purpose-built card, right? Because जब आप दूसरे see, you'll say कि यार डाइनिंग पे तो और भी कार्ड डिस्काउंट देते हैं, लेकिन व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट देम, एक तो मेरे को ट्रैक करना पड़ता है कि यार मेरा एक बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है. आई डोंट लाइक दैट टर्म्स एंड कंडीशंस अ लॉट, राइट? बिकॉज देखो, आई ईट ऑल्सो एटलीस्ट 3-4 टाइम्स आउट इन अ मंथ, राइट? कभी कभी 5-6 बार भी हो जाता है. मुझे चाहिए कि जब मैं खा रहा हूं, मुझे ये ना याद करना पड़े कि ये कार्ड पे डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा. आई वांट टू स्वाइप माय कार्ड, आई वांट टू मेक श्योर be done with it. And I feel that a good purpose built card should also have decently okay limits for that particular, matlab, Yeah. it should be not like once a month. Yeah. Once a month is too restricting in my view. Yeah, yeah. Right? So that's what I like about it. The other thing, like there are other restaurants also, right? मतलब because now we're talking about dining, एक दो और restaurants के बारे में बात करना तो बनता ही है. वाले रेस्टोरेंट बताओ ना. नहीं फ्लैशी वाले नहीं यार, मेरे को आजकल बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आइडिल नाम का एक रेस्टोरेंट है. Oh, Indira Nagar one. इंदिरा Well, नगर. ah, हाँ. nice. तो आइडिल इज मॉडर्न इंडियन, तो फ्यूजन देते हैं यार वो. सो फॉर एग्जाम्पल दे हैव दीज अमेजिंग क्रैब पकोड़ा स्लाइडर्स. कभी सोचो, लाइक थिंक अबाउट इट, क्रैब फ्राइड एज अ पकोड़ा, सम सिराचा मेयो, onion jam, some relish, some pickles in a nice soft slider. It is beautiful. It's crunchy, it's soft, amazing first bite. You know, it goes really well. The other thing that I really like there is they have a prawn that is served with small chunks of fried idli. So it's tossed in these Indian spices, but imagine idli going with prawns. Matlab, it is next level. I really like it. This sounds like that अपना घी पोड़ी हाँ. Benedict वाला फंडा. Oh, matlab, it's really modern Indian flavors. And then they have a rasmalai tres leches with
rabdi and roast milk. Okay. So think about Tres Leches is this dessert that we all know, which 100%. is international, but giving it that rasmalai ka flavor, adding some rose milk and some pistachios on top, it really makes it desi. So when you're feeling like a good dessert ना Indian dessert चाहिए तो अपन पहुंच जाते हैं उधर. और अच्छी बात ये है कि अगर आप 2-3 दिन एडवांस में बुक करो ना तो इजी डाइनर के पार्टनरशिप की वजह से 25% ऑफ मिल जाता है. And on the card, you get another 25% off, right? So your effective reward rate is way more than 30 to 35%. That is what I really like about this card. So these are Perfect. use cases. Perfect. बताओ तुम्हारी कैटेगरी क्या है? तुम कौन सा पर्पस सॉल्व कर रहे हो आजकल अदर देन बैंकॉक? ये मैं पहले दिखाऊंगा. बैंकॉक के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई कार्ड नहीं है, ना ही एम्स्टर्डम के लिए, ना ही वेगस के लिए. दिस इज द कार्ड दैट मोस्ट पीपल नो एंड आई थिंक यू आल्सो गॉट इट नाउ. पर्पस इज टैक्स पेइंग, राइट? एंड आई थिंक बहुत दर्द होती है जब टैक्स भरना पड़ता है. आई मीन यू आर ऑब्वियसली फॉर्चुनेट टू अर्न मनी एंड यू नो यू पे टैक्सेस, बट in the past I think always been like little it hurtful when you pay taxes, right? So for this I think clear mandate है, हर महीने अपना advance tax भरो. A lot of business people will also you know pay GST, उसके ऊपर भी multiplier मिलता है, and 16.6% is mad. Yeah. मतलब imagine कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 56,250 रुपीज भर रहा हूँ और मुझे 7,500 बोनस पॉइंट्स मिल रहे हैं फॉर बीइंग अ गुड सिटीजन. सो आई कॉल इट अ गुड सिटीजन बोनस. Right? So this card I feel is a really strong purpose built card. It also has a lot of business multipliers for certain categories like utilities. Right? और पेज़ैप पे अगर आप जाके यूटिलिटीज का बिल भरोगे वहां पे भी आपको मल्टीप्लायर मिलता है. सो इन माई हेड आई थिंक दिस इज अनदर ब्यूटिफुल एग्जाम्पल वेयर यू नो इट्स बिल्ड फॉर अ सर्टन केस, सर्टन आई कैन होल्ड दिस कार्ड जस्ट फॉर दिस. मैं और कोई रीजन के लिए कार्ड यूज नहीं करता हूँ. एंड आई फील दैट एनीबडी who has the purpose of, you know, paying taxes, GST, utilities, some SaaS software also has that multiplier. I would say this is a kick-ass card. You should go for it. Awesome. 100% agree. I think particularly if you're someone who has to pay advance tax, ये card ज़बरदस्त है. And what I also like about this card is the 1:1 transfer to our favorite airline, which is Singapore Airlines KrisFlyer. तो वहाँ पे the value that you can extract is beyond 1 rupee. It's not just 1 rupee. And we know that Singapore Airlines is a fabulous product. So I think like that is the reason that I got the card. It's just not another card that you can use to, you know, go ahead and buy a flight ticket or book a hotel. But transfer partner उसका KrisFlyer है, which is like a super sweet spot. बट एक बात बताता हूँ बहुत ही फनी. व्हेन आई वाज टेकिंग दिस कार्ड मैं मेरे माइंड में चल रहा था यार, डज इट फिट द आदिल्स फिट इन द वॉलेट फिलोसॉफी, व्हिच इज की कार्ड सेक्सी भी लगना चाहिए. सो वन ऑफ द थिंग्स आई लाइक अबाउट दिस कार्ड, इट फील्स नाइस इन द हैंड, राइट? एंड माय क्राइटेरिया इज कि यार कोई भी कार्ड यूज करो हमेशा इंश्योर करो कि यार इट लुक्स लाइक यू फील गुड व्हेन यू स्वाइप इट. सो अनदर कार्ड विद ब्लैक कलर, जस्ट लाइक द कार्ड. चलो और एक कैटेगरी पे आते हैं. आप ग्रेट इंडियन पॉइंट्स एंड माइल शो पे हो और ट्रैवल की अपन बात ना करें, ये कैसे हो सकता है, राइट? आपको पता है कि आई लव फ्लाइंग, आई सो डू यू. इट्स जस्ट दैट देर आर सर्टेन products in the market, there are certain flyers in the market that we have massive love for. One of those products, like you know, is Emirates for me, and I am a lifelong fan of Emirates. तो मेरे को ये कार्ड तो लेना ही था, and this card is the this has my Skywards number, so I will hide it a little bit, but this is the ICICI Bank Emirates Skywards Emerald credit card. I love it, yaar. मतलब it looks good. It's got a great reward rate of 2.5% Emirates miles per 100 rupees spent. And along with this, what happens is if you spend 15 lakh rupees a year on this card, of which 50,000 has to be on Emirates, Baki 14.5 you spend anywhere, it doesn't matter. It gives you complimentary Emirates Gold. It comes with the default Emirates Silver status. So you've never flown Emirates, you've never done a transaction with Emirates. You bump up straight to Silver. But if you spend 15 lakh rupees a year on it, of which 50,000 is on Emirates, then you will get to Emirates Gold. Now, Emirates Gold, I am a fan. I hold that status thanks to this card. And I try and spend 15 lakh rupees a year on this card so that I can continue to be Emirates Gold. Simply because I travel and fly Emirates 3 to 4 times a year at the minimum, and all my flights are long-haul flights. They're either to potentially London or to US. And this carrier, I know my upgrade frequency, my mileage currency, and my travel style really suits me.
which is why I've been a fan of this card. Now, a lot of people keep telling me, Adil, this card is discontinued. They're not issuing this card. Yeah, online I see, yes, they're not issuing this card. But if you want this card, I'd say walk into ICICI Bank and apply on offline basis. They are still issuing and they still give this card. Multiple people that I've recommended have got this card in the last few weeks. If you love flying Emirates, this is the greatest hack to getting Emirates Silver and Skywards Gold if you can spend 15 lakh rupees a year. If you can't spend anything, spend 10,000 rupees, get instant Emirates Silver. You also get 10,000 Emirates Skywards miles as a joining bonus when you join, which is fantastic. And I think this is also the definition of pure purpose card. ना आपका purpose है कि आप regularly US fly करने वाले हो, पर regularly Emirates fly करने वाले हो. I think a lot of the other loyalty cards also fit into this construct. But like I feel this is a great card. Do what works for you. Like this is something that works for me. Agreed. All right, guys, let's bring this to a close. That was a short episode on 5 purpose-built credit cards that we wanted to bring to you and share what are we using and why we're using across what purposes. If you like this format, give us a thumbs up. Tell us you liked it. If you didn't like it, wo bhi bata dena, because we're thinking for our members on YouTube, our members who have purchased lounge access, we're thinking we'll do short bite-sized segments like these and bring you these formats so that you can tune in and have access to shorter and crisper conversations. If you have suggestions on what all we should do for members-only content, please put it in the comments. We are more than happy to share this with you. If you're already part of the Great Indian Lounge, you know there's a feedback channel. Wahan jaake dal do, and then we'll take a look and we'll try and come up and create these formats shortly with you. With that, this is Dhimant and Adil signing off for the Great Indian Points and Miles show. Lights flashing bright, we're on the go. Tune in now, there's so much to know. Earning bits, travel dreams we sow, all aboard the Great Indian Points and Miles show. 0 to hero in the blink of an eye. Fly first class, no need to be shy. Redemption sweet, touching the sky. Award seats booked, let's give it a try. Award seats booked, let the points flow. It's all aboard the Great Indian Points and Miles show. Unlocking journeys wherever you go. The sky's the limit, feel the travel mojo. Hidden treasures in every flight. Nights in places that feel so right. From deserts to the city lights, get set, steal those dazzling sights. Miles stack up each passing day. Rewards come back in a million ways. In this game you want to play, the Great Indian Adventure, yay! Award seats booked, let the points flow. It's all aboard the Great Indian Points and Miles show. Unlocking journeys wherever you go. The sky's the limit, feel the travel mojo.